Good morning, children. Welcome back to Easy English by Singh. And today we are going to have basic English discussion. Use of need to, should, must, ought to, and was and were able to. Well, first of all, you ask, sir, what are they? Need to, need not to, must, should, was able to, were able to. They are called models. See, often in day to day spoken English, we make use of need to, need not, must not, should not, ought not. They are models. Then let us talk about should and must. What is the difference? Should और must में क्या difference है? Should डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है. ये एलिमेंट्री डिज़ायर, जैसे आप चाहते हैं कि आई विश आई शुड गो टू लंदन. मुझे मेरी इच्छा है कि मैं लंदन. आई विश आई शुड टीच यू इंग्लिश. मेरी इच्छा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँ. आई विश आई शुड हेल्प यू. मेरी इच्छा है कि मैं आपको हेल्प करूँ. तो ये शुड ऑल्सो expresses desire. Like Gandhi ji always preached honesty and truth, and he always said to the people that people should love one another. So it was his desire. Should is always expressing desire, but must always have more emphasis than desire. So it may be used for conveying compulsion, like all the students must get registered in class 9 and 11 so that they can appear in board exam in class 10 and 12. All the students must be regular. उन्हें regular होना चाहिए. You should study hard. This is desire. You must study hard. This is some compulsion, advice. So must is having a better emphasis. Must थोड़ा जोर देता है कोई बात पर, जैसे कि आपको करना ही चाहिए. यू मस्ट अटेंड टू योर क्लासेस. आपको अपनी क्लास को अटेंड करना ही चाहिए. यू शुड अटेंड योर क्लासेस. दिस इज डिजायर. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी पेरेंट दैट द चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट. यू शुड बी रेगुलर इन योर क्लास. दिस इज डिजायर. But when you say you must be regular in the class, this is compulsion. So should always expresses desire, must expresses compulsion. Now in interrogative form, should is used for a polite request, like should I help you, should I come at your house, should I ask for your bike, should I take your bike for an hour, should I take your copy for an hour. So this is interrogative form. Should is always a polite request. Even must also. Must we not ask for a day holiday? Must we not go for a trip? Must we not sit for studies? So all these should, all models with questions expresses some kind of polite request or permission. But now need and need not. See, the need actually is a finite verb. Like we need to help one another. Here it is not a model. Here it is a verb. She needs to go there. उसे वहाँ जाना चाहिए या जाने की ज़रूरत है. She needs to help one another. She needs to help the poor. उसे poor को हेल्प करना चाहिए. तो इस चाहिए का अर्थ में होता है. चाहिए का अर्थ का मतलब हुआ कि होना चाहिए, लेकिन उसी में जब नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव निगेशन हो जाता है और उसमें टू नहीं लगता. जैसे सी नीड नॉट गो देयर, वहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं है. सी नीड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग. उसे किसी बात के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है. सी नीड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. उसे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. तो नीड नॉट जो होता है, जब वो नॉट लगा देते हो तो मॉडल के रूप में यूज़ होता है. हाँ, वर्ब नहीं है, लेकिन नीड जो है फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज़ होता है. जैसे वी नीड टू अंडरस्टैंड वन अनदर. हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है. वी नीड टू हेल्प वन अनदर. हमें एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है. वी नीड टू स्टडी हार्ड. वी नीड टू रिवाइज हार्ड. वी नीड टू कॉम्प्रिहेंड दिस मैटर. वी नीड टू कन्वे दिस मैटर. ये बात को कहने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है. तो नीड वर्ब के रूप में यूज़ होता है जब ये अफर्मेटिव फॉर्म में रहेगा, और वही नॉट लग जाएगा तो ये मॉडल्स हो जाएगा. अब आ जाइए ऑट. ऑट इज ऑल्सो
यूज फॉर कंपल्सन, मोरल कंपल्सन, मोरल ऑब्लिगेशन। जैसे वी ऑट टू डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी है, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी। सो ऑट टू कन्वेज an obligation or a duty, like we ought to defend our country, we ought to be honest, we ought to help our country, we ought to pay our taxes. All these are moral obligations. Or ought not is in a negative form, we ought not bother about anything। जैसे ought to है वैसे ought not है, उसमें to लगाने की बाद में जरूरत है। जैसे we ought not to help unwanted people, we ought not to bother about anything else, like that। तो ought to is always having a moral obligation। और should और ought में ought to जो है ज़्यादा emphasis देता है कोई बात। जैसे we should defend our country, it is a desire, लेकिन ought to में करिएगा तो वो एक तरह से moral obligation हो जाएगा। we ought to defend our country, हमें करना ही चाहिए। we ought to protect our people, हमें करना ही चाहिए। और वही शुड में कीजिएगा तो एक डिजायर हो जाएगा। तो आज हम लोग यही सीखे। और टू नीड टू, आवाज और वेयरेबल टू का यूज भी मॉडल्स में होता है। जैसे व्हेन ही वाज एट मुंबई, ही वाज एबल टू प्रूव हिमसेल्फ बाय वर्किंग 12 आवर्स, लाइक दैट। तो इट इज ऑल्सो यूज एज मॉडल। जैसे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हेल्प ऑल द पीपल बाय द गवर्नमेंट, ये भी मॉडल्स के यूज में होता है। लेकिन जनरली वाज और वेयर जो है एक्जिलरीज वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे शी वाज रीडिंग ए बुक, तो वहाँ वाज ये हो गया, एक्जिलरी हो गया, और रीडिंग मेन वर्ब हो गया। तो ये मेन वर्ब के साथ वाज और वेयर का यूज होता है। वाज एबल टू, वेयर एबल टू को भी मॉडल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बेसिक चीज़ पर ध्यान दिए। थैंक्स ए लॉट।